ये है फ्लावरिंग मॉर्फोलॉजी का शॉर्ट नोट्स पहले देख रहे हैं। तो सबसे पहले है कि पॉसफेई है जो भीट, पॉसफेई में आता है भीट, राइस, ओट, मेज और शुगरकेन। एपिकल बर्ड है जो लीफ बनाएगा और एक्सिलरी बर्ड से ब्रांच या फ्लावर है जो बनाएगा। एपिकल बर्ड है जो ग्रोथ इन द लेंथ करता है। मेज है जो रेफिमोज है। एक्रोपिटल है जो ब्रासिकेफेई और फावफेई होता है। बेसिपिटल सोलनोफेई और लिलियफेई होता है। मुलेट ही फावफेई और सोलनोफेई होता है। फिर आता है कि रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है जो इपिगैनस होता है। जो ब्रासिकेफेई है पॉलीसेप्लस और पॉलीपेटल होता है, टेट्रामेरस होता है। फावफेई गैमोसेपल पॉलीपेटल होता है और पेंटामेरस होता है। सोलनोफेई जो गैमोसेपल गैमोपेटलस होता है, पेंटामेरस होता है। और जो लिलियफेई होता है वो गैमोटेपलस और ट्राइमेरस होता है। कोरोला पेटल्स जब फ्यूज होता है तब डिफरेंट शेप इन द पेटल आता है। लेडी फिंगर, चाइना रोज और कॉटन माल भी फेई फैमिली का है। मोर कॉमन इन फ्लोरेंस जो रेशिमोज होता है। एक्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ द सेपल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सेपल और पेटल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पेटल को कहेंगे। बैल बेट नॉट ओवरलैप कैलोट्रॉपिस हो जाएगा। ट्विस्टेड में रेगुलर कोचिनला माल भी फेई होता है। इम्ब्रिकेट में इरेगुलर और कफगुल हो जाएगा। वैक्सुलर में क्रोला में प्रेजेंट होता है फाउसियाई। फिर C1+2+2 है जो स्टैंडर्ड वैक्सीलियम होता है। लेटरल पेटल बिंग और एली और एंटीरियर पेटल को किल और करीना कहते हैं। फिर इम्ब्रिकेट और वैक्सुलरी ये दोनों है जो जाइगोमॉर्फिक होता है। फ्यूज विथ इन द होल में स्टेमन, फ्यूज एमॉन्ग देमसेल्व्स, तो इसमें मोनोडेल्फस चाइना रोज मालभिफेई आता है। डाइडेल्फस में फावफेई और पॉलीडेल्फस में आता है फिट्रस। फिर फ्यूज बिटवीन द होल तो इसमें इपीपेटलस और इपीफाइलस आ जाएगा। इसमें आ जाएगा फ्यूज विथ दी इसमें आ जाएगा फ्यूज विथ द पेटल और द टेपल। फिर इसमें देखते हैं प्लेफेंटेफन, तो मार्जिनल में आता है वेंट्रल और वेंट्रल रिज पार्ट हैव दे डेवलप प्लेफेंटा ऑन द बोथ साइड, पी फाफे आ जाएगा। फिर एक्जाइल में आता है प्लेफेंटा एक्जियल ओवरी इज मल्टीलोकुलर, तो इसमें ले चिंतो फुलफे और लिलिफे आता है। प्री फेंट्रल सेप्टा एब्सेंट में आता है यूनिलोकुलर ओवरी, तो और होता है प्लेफेंटा फेंट्रल प्लस फेरिफेरल पार्ट पर इसमें होता है यूनिलोकुलर ओवरी और प्लेसेंटा फेंट्रल, तो ये हो जाएगा डीप्री। फिर पेरिएटल में आता है प्लेसेंटा इनर वॉल पर होगा, आजमू फॉल्स सेप्टम होगा और बायोलोकुलर हो जाता है फॉल्स सेप्टम के पास। उसके बाद फिर आता है बैफल, तो बैफल में यूनिलोकुलर होगा। प्लेसेंटा इज एट द बेस ऑफ द ओवरी और ओवूल डेवलप फ्रॉम द बेफल पार्ट, इसमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड आता है। यूनिलोकुलर मैनी ओवुल तो इसमें प्री फेंट्रल आ जाएगा और यूनिलोकुलर सिंगल ओवुल तो इसमें बैफल आ जाएगा। फिर टाइप ऑफ द फ्रूट यूकार्प, सूडोकार्प, एप्पल, कैशू, स्ट्रॉबेरी आएगा और पाथनोकार्प में बनाना आता है। सिंपल में डेवलप फ्रॉम द आइदर मोनोकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस। फिर आइग्रेट में आता है डेवलप फ्रॉम द मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस। कस्टर्ड और एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, ये सब जो है। फिर आरपीपी, लोटस, एप्रिकॉट, आलमंड, वालनट महंगे चीज़ जो आते हैं, लेकिन मलबरी जो है वो नहीं आता है। एग्रीगेट में सब आ रहा और माइकिलिया भी एग्रीगेट है। तो बात करते हैं कंपोजिट की, तो डेवलप फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेंस से डेवलप हो जाएगा। इसमें मलबरी, पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, बनियान, पीपल और फिग आएगा यानी फिकस। स्ट्रॉबेरी जो होता है फॉल्स फ्रूट होता है, इसमें एग्रेट फ्रूट है। फिर डाइकोट में आता है ब्रासिकेफेई, फाउफेई। मोनोकोट में आता है ऑर्किड और ऑर्फिस, इसमें नॉन इंडोफर्मस और एक्स एलुमिनस होता है। डाइकोट में फुलनाफेई आता है। फिर लिलियफेई, पॉफे और कोकोनट जो होता है मोनोकोट में आता है, इंडोफर्मस और एल्बुमिनस हो जाता है। रूट में नोड पर या इंटरनोड नहीं होगा, पर ब्रांच है जो होते हैं। स्टेम ब्रांच डेवलप ऑन द नोड होता है एक्सोजिनस और रूट ब्रांच डेवलप फ्रॉम द इनसाइड होता है इंडोजिनस, उसको कहते हैं। फिर आता है एडवेंचर फ्रूट है जो अदर देन द रेडिकल्स आता है। और फाइबर फ्रूट जो है बेस ऑफ द स्टेम से आता है। सेल ग्रोथ जोन ऑफ द इलोंगेशन कहता है। मॉडिफिकेशन ऑफ ए टैप रूट स्टोरेज रेडिस, कैरेट, टर्निप में हो जाएगा। और नेंटोफिक्सेशन पी में होता है। रेस्पिरेटरी रूट राइजोफोरा और मैनग्रोव में होता है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंचर फ्रूट में स्टोरेज स्वीट पोटैटो और एस्पारगस में आता है। सपोर्ट में बनियान, प्रोप रूट और मेज फोरकेन स्टिल्ट रूट में आएगा। पैराफिटिक रूट में कस्क्यूटा और इपीफाइटिक रूट में आता है ऑर्किड। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम देखें तो इसमें आता है एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल में टेंड्रिल में कुकुम्बर, ग्रेप वाइन आएगा, जिसमें पंपकिन और वाटरमेलन आता है। थॉर्न्स में सिट्रस, बोगनविला। फोटोसिंथेटिक स्टेम फाइलोक्लाड में कैक्टस, फ्लैट और यूफोर्बिया और फ्लेंडिकल आता है। फिर सब एरियल में रनर, ग्राफ और स्ट्रॉबेरी। स्टोलन में मिंट, जैस्मिन। ऑफिट में कोनिया, पिफ्टिया और शक्कर में बनाना, क्राइनेटिवम, पाइनएप्पल आएगा। फिर अंडरग्राउंड में ट्यूबर, पोटैटो और कॉर्न में कोलकैफिया, एमोर्फोफिलस आता है। बल्ब में ओनियन, गार्लिक और राइजो में बनाना, टर्मरिक और जिंजर आ जाते हैं। नेक्स्ट है टेंड्रिल थॉर्न है जो होमोलोगस है, दोनों एक्सिलरी बड से बनता है। थॉर्न स्पाइन है जो एनालॉगस है क्योंकि थॉर्न स्टेम से और स्पाइन है जो लीफ से बनता है।
सिंपल लीफ मैंगो, मस्टर्ड, चाइना रोज में आता है, पिनेट कंपाउंड रोज अर्नी में, और पाल्मेट कंपाउंड है जो सिल्क कॉटन में आ जाएगा। फिर आता है फैलोटैक्सी, तो अल्टरनेट या स्पायरल मोस्ट कॉमन है, इसमें मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर आएगा, एमएससी। अपोइट में गुआवा, कैलोट्रोपिस, और होल्ड में आ जाएगा अल्स्टोनिया और नीरिम। ऑस्ट्रेफिया में इपिगाइनस, बैफल और अल्टरनेट फैलोटैक्सी आता है। ब्राफिकेफिया में ये वाला आ जाएगा, इसका ब्राफिकेफिया का है, और फावफे का ये है, उसके बाद फोलमफे का ये है, और लिलियाफे का ये है फ्लोरल फार्मूला। मोस्ट कॉमन एक्टिवेशन जो होता है वो होता है वेलवेट। अब इसका आगे बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का एनसीईआरटी में। तो इससे क्वेश्चन 2024 में भी आए थे, लेकिन वो डायग्राम से क्वेश्चन आया था। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एनसीईआरटी कहता है कि द वाइड रेंज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच a large diversity in the external structure or the morphology. They are all characterized by the appearance of the root, stem, leaves, flowers, and the fruits. In the chapter 2 and the 3, we talked about classification of the plants based on the morphological and the other characteristics. For any successful attempt at the classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know understand technical terms and the standard definition. We also need to know about the possible variation in the different parts found at the adaptation of the plant to their environment. Example, adaptation to the various habitats for protection, climbing, of storage, etc. If you pull out any weed, you will see that all of them have the root, stem, and the leaves. They may be bearing flowers and the fruit. The underground part of the flowering plant is the root of system, while the portion above the ground forms the food system. Root. So in majority of the dicotyledon plant, direct elongation of the radical leads to the formation of the primary root, which grow inside the soil. It bears the lateral roots of the several orders that I refer to as the secondary, tertiary, etc. Roots, the primary roots and its branches constitute the taproot system as seen in the mustard plant. In monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and replaced by a large number of the roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous system as seen in the beet plant. In some plants like the grass, monstera, and the banyan tree, root arise from the parts of the plant other than the radical and are called the adventitious root. The main function of the root system are absorption of the water and the minerals from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts, storing reserve food materials, and the synthesis of the plant growth regulators. ये डायग्राम दिए हुए पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, इसमें दिखाए हुए है फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, फूड सिस्टम, और नोड, इंटरनोड, बर्ड दिखाए हुए, प्राइमरी रूट, सेकेंड रूट, फिर रूट सिस्टम दिखाए हुए। फिर इधर दिए हुए लैटरल्स और मेन रूट दिखाए हुए, फाइबर फ्रूट दिखाए हुए, फिर टैप रूट, फाइबर फ्रूट और एडवेंचर फ्रूट है जो आता है। नेक्स्ट है रीजन्स ऑफ द रूट। तो the root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of the meristematic activity. The cells of this region are very small, thin-walled, and with a dense protoplasm. They divide repeatedly. The cells proximal to this region undergo the rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in the length. This region is called the region of the elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of the elongation is called the region of the maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called the root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. अब यहाँ पर दिया हुआ है ये रूट हेयर दिया हुआ है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रूट कैप दिखाए हुए। इसके बाद फिर आता है द स्टेम। तो व्हाट आर द फीचर ऑफ दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम अ रूट? द स्टेम इज द ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers, and the fruit. It develops from the plumule of the embryo of the germinating seed. The stem bears nodes and the internode. The region of the stem where leaves are born are called the nodes, where the internodes are the portion between the two nodes. The stem bears the buds, which may be terminal or the axillary. A stem is generally green when the young, and the latter often become woody and dark brown. The main function of the stem is spreading out branches bearing the leaves, flowers, and the fruits. It conducts water, minerals, and the photosynthesis. Some stems perform the function of the storage of the food, support, protection, and of the vegetative propagation. फिर आता है the leaf. So the leaf is the lateral, generally flattened structure borne on the stem. It develops at the node and bears a bud in its axial. The axillary bud later develops into the branch. Leaves originate from the foot apical meristem and are arranged in an acropetal order. They are the most important vegetative organs for the photosynthesis. फिर यहाँ पर दिया हुआ लमाइना.
स्टिप्यूल, पिट्यूल, लीफ बेस और ऑक्सिलरी बड दिए हुए। फिर कहता है कि ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स लीफ बेस पिट्यूल एंड द लमाइना। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ base and may be a two lateral and a small leaf-like structure called the stipules. In monocotyledonous, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. In some leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called the pulvinus. The petiole help hold the blade to light. Long, thin, flexible petioles allow the leaf blades to flutter in the wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. The lamina or the leaf blade is a green expanded part of the leaf with the veins and the venlets. There is usually a middle prominent vein which is known as the midrib. Veins provide a rigidity to the leaf blade and act as channels of the transport for the water, minerals and the food materials. The shape, margin, apex, surface and the extent of the incision of the lamina vary in the different leaves. फिर बात करते हैं भिनेशन की। तो द अरेंजमेंट ऑफ द भेन्स एंड द भेनलेट्स इन द लामाइन ऑफ द लीफ इंटरमेड एट द भिनेशन। व्हेन द भेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द भिनेशन इंटरमेड एट द रेटिकुलेट। व्हेन द भेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विथ इन द लामाना द भिनेशन इंटरमेड एट द पैरेलल। Leaves of the dicotyledonous plant generally possess reticulate venation while the pallen venation is the characteristic of the most monocotyledonous plant. यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ जिसमें पार्ट्स ऑफ द लीफ रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। नीम, फिल कॉटन, फिर कंपाउंड लीफ में दिया हुआ पेनेट्री कंपाउंड और पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ। उसके बाद करते हैं टाइप्स ऑफ द लीव्स की। तो लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स lamina is entire or when inside. The incision do not touch the midrib. When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of the leaflets, the leaf is called a compound. A bud is present in the axial of the petiole in both simple and the compound leaf, but not in the axial of the leaflets of the compound leaf. The compound leaves may be of the two types. In a planetary compound leaf, a number of the leaflets are present on a common axis of the rachis, which represents the midrib of the leaf as in the neem. In the palmetally compound leaves, the leaflets are attached at the common point, that means at the tip of the petiole as in the fill cotton. बात करते हैं phyllotaxy की। तो phyllotaxy is the pattern of the arrangement of the leaves on the stem or the branch. This usually of the three types alternate, opposite and the hold. In the alternate type of the phyllotaxy, a single leaf arises at each node in the alternate manner as in the China rose, mustard and the sunflower plant. In the opposite type, a pair of the leaves arise at each node and in the lie opposite to each other as in the calotropis and the guava plant. If more than two leaves arise at a node and form a hole, it is called as the hold as in the alstonia. फिर आता है द इनफ्लोरेंस। तो ए फ्लावर इज मॉडिफाइड फूड वेयर इन द फूड एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम. Internodes not elongate and the axis get condensate. The apex produce different kinds of the floral appendage laterally at the successive nodes instead of the leaves. When a fruit tip transforms into a flower, it is always flattery. The arrangement of the flowers on the flower axis is determined as the inflorescence. Depending on whether the apex gets developed into a flower or continue to grow, two major types of the inflorescence are defined: racemose and the phymose. In racemose type of the inflorescence, the main axis continue to grow. The flowers are borne laterally in an acropetal succession. In the phamoid type of inflorescence, the main axis terminates in a flower, hence is limited in the growth. The flowers are borne in the basipetal order. अब यहाँ पर दिया हुआ रेफिमोज इन्फ्लोरेंस का पिक्चर दिए हुए और यहाँ पर दिए हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइलोटैक्सी जिसमें अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। ये चाइना रोज है एमएफसी अल्टरनेट और गुआवा है कैलोट्रोपिस जो कि अल्टरनेट कहीं दिखाए हुए। यह है फाइमोज इन्फ्लोरेंस। फिर आता है द फ्लावर। So the flower is the reproductive unit in the angiosperm. It is meant for the sexual reproduction. A typical flower has the four different kinds of the holes arranged successively on the filling end of the stalk or the pedicel, called the thalamus or the receptacle. These are the calyx, corolla, endoecium, and the gynosium. Calyx and corolla are the accessory organs, while the endoecium and gynosium are the reproductive organ. In some flowers like the lily, the calyx and the corolla are not distinct and are termed as perianth. When the flower has both endoecium and the gynosium, it is bisexual. A flower having either only stamens or only carpels is unisexual. In symmetry, the flower may be actinomorphic radial symmetry or zygomorphic bilateral symmetry. When a flower can divide into two equal radial halves in any radial plane, passing through the center, it is said to be actinomorphic. Example: mustard, datura, chili. When it can be divided into two similar halves only in the one particular vertical plane, it is zygomorphic. Pea, moher, bean, cassia. A flower is asymmetric, irregular if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, as in the kana. A flower may be trimerous, tetramerous, or the pentamerous when the floral appendage are in the multiple of the 3, 4, or the 5, respectively. Flowers with the bracts, reduced leaf found at the base of the pedicel are called as the bracteate, and those without bracts are called as the ebracteates. यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था। ये दोनों है जो पेरीगाइनस था, ये वाला है जो इपिगाइनस है। इपिगाइनस का इस प्रकार था और ये जो था ये था हाइपोगाइनस।
Next है कि based on the position of the calyx, corolla and the adnosium in respect of the ovary on the thalamus. The flowers are described as the hypogynous, perigynous and the epigynous. In the hypogynous flower, the gynosium occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in the first flower is said to be superior, mustard, china rose and the brinjal. If the gynosium is situated in the center and the other parts of the flower located at the rim of the thalamus, almost at the same level, it is called the perigynous. The ovary here is said to be half inferior, plum, peach, rose. In the epigynous flower, the margin of the thalamus grows apart and closing the ovary completely and getting filled with it. The other parts of the flower arise above the ovary, hence the ovary is said to be inferior as in the flower of the guava and the cucumber and the ray florets of the sunflower. For other parts of the flower, so each flower normally has the four holes: calyx, corolla, androecium and the gynosium. The calyx is the outermost hole of the flower and the members are called as the sepals. Generally, sepals are the green, bear leaf-like and protect the flowers in the bud stage. The calyx may be gamosepalous, sepals united or polysepalous, sepals free. For the corolla is composed of the petals. Petals are usually brightly colored to attract insects for the pollination. Unlike the calyx, corolla may also be gamopetalous, petals united or the polypetalous, petals free. The shape and the color of the corolla vary greatly in the plants. Corolla may be tubular, bell-shaped, funnel-shaped and the wheel-shaped. Activation, the mode of the arrangement of the sepal or the petals in a flower bud with respect to the other members of the same whole is known as the activation. The main type of the activations are the velvet, twisted, imbricate, and the vexillary. When the sepals or the petals in a whole just touch one another at the margin without overlapping, as in the calotropis, it is said to be velvet. If one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on, as in the china rose, the ladyfinger and the cotton, it is called twisted. If the margins of the sepal or the petals overlap one another but not in any particular direction, as in the cassia and the gulmohar, the activation is called the imbricate. In the pea and the bean flowers, there are 5 petals. The largest standard overlaps the 2 lateral petals wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petal keel. This type of activation is known as the vexillary or the papillonaceous. फिर बात करते हैं एंड्रोसियम की. तो एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ द स्टैमन्स. ईच स्टैमन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ a stalk or the filament and an anther. Each anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambers. The pollen sacs, the pollen grains are produced in the pollen sacs. A sterile stamen is called the staminode. Stamens of the flower may be united with the other members such as the petals or among themselves. When stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in the brinjal or epiphyllous when attached to the perianth as in the flower of the lily. The stamens in the flower may either remain free, polyandrous, or may be united in the varying degree. The stamens may be united to form one bunch or one bundle, monodelphous as in the china rose, or the 2 bundles, diadelphous as in the pea, into more than 2 bundles, polydelphous as in the citrus. There may be variation in the length of the filament within the flower, the salvia and the mustard. फिर बात करते हैं गाइनोशियम की. तो गाइनोशियम is the female reproductive part of the flower and is made up of 1 or more carpels. A carpel consists of 3 parts, namely the stigma, style, and the ovary. Ovary is the enlarged basal part on which lie the elongated tube, the style. The style connects the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for the pollen grains. Each ovary bears 1 or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. When more than one carpel is present, they may be free, as in the lotus and the rose, and are called as apocarpus. They are termed syncarpus when the carpels are fused, as in the mustard and tomato. After fertilization, the ovules develop into the seeds and the ovary matures into the fruits. Placentation. The arrangement of the ovules within the ovary is known as the placentation. The placentation are of different types, namely the marginal, axial, parietal, basal, central, and the prefrontal. In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules are borne on this ridge, forming 2 rows as in the pea. When the placenta is axial and the ovules are attached to it in the multilocular ovary, the placenta is said to be axial, as in the china rose, tomato, and the lemon. In the parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part. Ovary is one-chambered, but it becomes two-chambered due to the formation of the false septum, example mustard and the argemone. When the ovules are borne on the central axis and the septa are absent, as in the anthus and the primrose, the placentation is called the prefrontal. In the basal placentation, the placenta develops at the base of the ovary and a single ovule is attached to it, as in the sunflower or marigold. फिर आता है the fruit. So the fruit is a characteristic feature of the flowering plant. It is a mature or the rapid ovary developed after fertilization. If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called a parthenocarpic fruit. Generally, the fruit consists of the ball or the pericarp and seeds. The pericarp may be dry or the fleshy. When the pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer pericarp, the middle mesocarp, and the inner endocarp. If the mango and the coconut, the fruit is known as the drupe.
They develop from the monocarpillary superior ovary and are one-seeded. In mango, the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, a middle fluffy epicarp, mesocarp, and an inner stony hard endocarp. In coconut, which is also doped, the mesocarp is fibrous. The ovules after fertilization develops into the seed. A seed is made up of a seed coat and an embryo. The embryo is made up of a radical and embryonal axis and one as in the beet maize and two cotyledons as in the gram and the pea. अब यहाँ पर दिया हुआ पार्ट्स ऑफ द फ्रूट दिया हुआ है जिसमें आता है मैंगो एंड द कोकोनट. इसमें इपिकार्प, मेजोकार्प, सीड और एंडोकार्प दिखाए हुए हैं. फिर आता है टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटेशन जिसमें मार्जिनल, एक्जाइल, प्रिएटल, फ्री फ्रंटल और बेफल दिखाए हुए हैं. उसके बाद फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलेडोनस सीड की. तो कहता है कि द आउटर मोस्ट covering of the seed is the seed coat. The seed coat has two layers, the outer testa and the inner tegmen. The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. Above the hilum is a small pore called the macropyle. Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and the two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of rare materials. At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. In some seeds such as the castor and the endosperm formed after as a result of the double fertilization is a food-storing tissue and called the endospermic seeds. In the plants such as the bean, gram and the pea, the endosperm is not present in the mature seeds and such seeds are called as the non-endospermous. अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड दिया हुआ है. इसमें हो गया सीड कोट, हाइलम, माइक्रोपाइल, फिर कोटिलीडोन, प्लूमूल और रेडिकल दिखाए हुए हैं. फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोटिलेडोनस सीड की. तो जनरली मोनोकोटिलेडोनस सीड्स आर endospermic but some as in the orchids are non-endospermic. In the seeds of the cereals such as the maize, seed coat is membranous and generally fused with the fruit ball. The endosperm is bulky and stores food. The outer covering of the endosperm separates the embryo as a proteinaceous layer called the alveolar layer. The embryo is small and situated in a group at one end of the endosperm. It consists of one large and the felt-shaped cotyledon known as the scutellum and a short axis with the plumule and the radicle. The plumule and the radicle are included in the seeds which are called the coleoptile and the coleorrhea respectively. अब यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोटिलेडोनस सीड. इसमें एंडोस्पर्म, स्क्यूटलम, कोलियोप्टाइल, प्लूमूल, रेडिकल और कोलोरिजा दिखाए हुए. फिर एंडोस्पर्म एम्ब्रो है. ये हो गया सीड कोट एंड द फ्रूट बॉल और एल्वेओलर लेयर हो जाता है. अब कुछ है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. तो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड to describe a flowering plant. The description had to be brief in a simple and the scientific language and presented in a proper sequence. The plant is described beginning with its habit, vegetative character, root, stem and the leaves, and then floral characters, inflorescence and the floral parts. After describing various parts of the plant, the floral diagram and the floral formula are presented. The floral formula is represented by the some symbol. In the floral formula, BR stands for the bracteate, K stands for the calyx, C for the corolla, P for the perianth, F for the endoecium, G for the gynoecium, G bar for the superior ovary and the G नीचे में बार है तो सुपीरियर ओवरी, G ऊपर में बार है तो इंफीरियर ओवरी फॉर द मेल एंड द O डैश O प्लस फॉर द फीमेल, O डैश एंड O प्लस फॉर द bisexual plant प्लस और O for the actinomorphic and the percentage for the zygomorphic. Nature of the flower. Fusion is indicated by enclosing the figure within the brackets and the addition by a line drawn above the symbol of the flower parts. A flower diagram provides information about the number of the parts of the flower, their arrangement and the relation they have with one another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the flower diagram. Calyx, corolla, endosperm and the gynoecium drawn in the successive holes, calyx being the outermost and the gynoecium being in the center. Floral formula also for the cohesion and adhesion between the parts of the flower holes and between the holes. The flower diagram and the flower formula in the figure 5.16 depends the mustard plant family Brassicaceae. अब ये फ्लोर डायग्राम पे तो फ्लोर फार्मूला दिया हुआ है. इसके बाद फिर आता है Solanaceae. तो it is a large family commonly called as the potato family. It is widely distributed in the tropics, subtropics and even temperate zone. Vegetative character तो most plant mostly herbs, shrubs and rarely small trees. Stem में आता है herbaceous, rarely woody, aerial, erect, cylindrical, branched, solid or the hollow, hairy or the glabrous. Underground stem in the potato, Solanum tuberosum. और leaves में आता है alternate, simple, rarely pinnate compound, exocyclate और venation reticulate आएगा. फिर आता है फ्लोरल कैरेक्टर में इनफ्लोरेंस में आता है फ्लैटरी, एक्सिलरी और फाइमोज इन द सोलनम. फ्लावर्स में आएगा बायोसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक. कैलिक्स में सेपल 5 यूनाइटेड परसिस्टेंट वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन. कोरोला में पेटल्स 5 यूनाइटेड वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन. एंडोसियम स्टेमन 5 इपीपेटलस. गाइनोसियम बाइकपलरी ऑब्लिगेटली प्लेफिड सिनकार्पस ओवरी सुपेरियर. बाइलोकुलर प्लेसेंटा फिलन विथ मैनी ओवल्स एक्जाइल. फ्रूट्स में आएगा बेरी और कैप्सूल. सीड्स में मैनी एंडोस्पर्म.
ये फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि मनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ द फूड। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, चिल्ली एंड द मेडिसिनल बेलाडोना, अश्वगंधा, फूमिगेटरी टोबैको एंड द ऑर्नामेंटल पिटूनिया। अब इसका समरी में है कि flowering plants exhibit enormous variation in the shape, size, of structure, mode of the nutrition, the lifespan, habit, and the habitat. They have well developed roots on the root system. Root system either tap root or the fibrous. Generally, dicotyledonous plant have the tap roots, while the monocotyledonous plant have the fibrous root. The root in the some plants get modified for storage of the food, mechanical support, and the respiration. The food system is differentiated into stem, leaf, flowers, and the fruit. The morphological feature of the stem, like the presence of the nodes and the internodes, multicellular hair, and the portably phototropic nature, help to differentiate the stem from the root. Leaf is a lateral outgrowth of the stem developed exogenously at the node. These are green in the color to perform the function of the photosynthesis. Leaves exhibit marked variation in their shape, size, margin, apex, and extent of the incision of the leaf blade lamina. The flower is a modified fruit meant for the sexual reproduction. The flowers are arranged in a different type of the inflorescence. They exhibit enormous variation in the structure, symmetry, position of the ovary in relation into other parts, arrangement of the petals, sepals, ovules, etc. After fertilization, the ovary is modified into the fruit and the ovules into the seeds. Seeds either may be monocotyledonous or the dicotyledonous. They may vary in the shape, size, and the period of the variability. The florine characteristic forms the basis of the classification and the identification of the flowering plants. This can be illustrated through the semi-technical description of the family. Hence, a flowering plant is described in a different sequence by using the scientific terms. The floral features are represented in the summarized form as the floral diagrams and the floral formula. The question: how is pinnately compound leaf different from a palmately compound leaf? Explain with a suitable example the different types of the phyllotaxy. Describe the following terms: activation, zygomorphic, epipetalous, placentation, superior ovary, actinomorphic, perigynous. Differentiate between the racemose and the phamoid inflorescence, apocarpus and the syncarpus ovary. Draw the label diagram of the following: gram seed ventral section of the maize. Take one of the flammable and write a semi-technical description. Also draw the flower diagram. Describe the various types of the plantation found in the flowering plants. Bhati flower. Describe the parts of the typical angiosperm flower. Define the term inflorescence. Explain the basis of the two different inflorescences in the flowering plant. Describe the arrangement of the floral members in relation to their insertion on the thalamus.